Hello students, how are you all? Have a great day. Today I'm going to cover a beautiful poem from class 12th, that is Keeping Quiet. Keeping Quiet is composed by a Chilean poet known as Pablo Neruda, though his original name was Neftal Ricardo Reyes Bastaldio, but he is better known as Pablo Neruda. Pablo Neruda, he has taken his initially as his pen name, but later on became his identity. He is globally he has been known as Pablo Neruda. Though he is a politician also, and a very successful politician and a diplomat, ambassador. He's got so much name and fame in political arena also. But he is better known for his poetry, and he's got a Nobel Prize in 1971 for his poetry. And his basic theme of his poetry is peace and humanity, disarmament, a world where there is no war-like situation, a world there is humanity, there is brotherhood. That's what he has promoted in all his poetry. And this poem is also having something like that only. If I have to consider this poem's theme, so peace, humanity, and brotherhood can be termed the theme of this poem. This poem is all about the poet wanted to have a global peace. Poets wanted to have a global harmony. Poet wanted to have brotherhood among the human beings. And this is what he has described in this poem. So the theme of the poem is peace, humanity, and brotherhood. Global peace, global humanity, and global brotherhood. So if you keep this in this mind, you'll be able to have an idea about the poem while you'll be facing your board exams. So now I'm starting with poem with line by line. Now we will count to 12 and we will all keep still. First two lines, what poet is saying that we are going to count 12. Why 12? That is the question. Why not any other number? 12 is signifying here, maybe not sure, but maybe 12 hours, maybe 12 months, or 12 days, something. So what poet is saying, now we'll count 12 and we will all keep still. Now we are going to be silent. Still means doing nothing, silent. So what poet is saying that for a moment, for some time, he wanted the world to be silent. He wanted the people to be silent. Maybe 12 hours, maybe 12 days, maybe 12 months, but he wanted everyone to be still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. For once, at least for 12 hours, or maybe 12 days, or maybe 12 months, he wanted there should be no discussion, nothing, don't speak anything. No language should be used. People should remain silent. So what does it mean? Why the poet wanted the world to be silent? What does it mean? It means that he wanted to promote a different kind of language, which is above the barriers of language, which is the language of feelings, language of brotherhood, language of humanity. He wanted to spread it out. He wanted the world to come out of the barrier of the language, because if you want to convey your feelings to a Russian and you don't know Russian language, you may not be able to convey your feeling, and he may not be able to understand what you want to say. So what poet here wanted that the world should come out of the language barrier and should adopt a different kind of language which is acceptable for everyone, which is the language of silence, which is the language of feelings. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. And further he is saying, let's stop for 1 second, not move our arms so much. It means further he is saying, don't move anything. He wanted everybody to be in sitting position. Leave whatever you are doing for some time. Just get rid of it. Just get out of it. Means what? He is not saying like people to sit idle and don't do anything, or stop your all kind of work, or leave all your responsibilities. That's what he is not saying. He just wanted to say that people should get out of their daily routine for a very short period. For a limited period, people should get out of their daily routine.
इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। और ये कह रहे हैं कि अभी एक बहुत ही बेहतरीन, एक्सोटिक मीन्स शानदार, एक बेहतरीन मूवमेंट होगा पूरी दुनिया के लिए, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वेयर यू विल सी देयर इज़ नो हॉच पॉच, देयर इज़ नो बडी रनिंग आफ्टर हेयर एंड देयर एंड नो इंजन्स, नो काइंड ऑफ मूवमेंट, everything is silent. That would be great to see. No, it would be kind of peace. Now here, what I already told you is the peace. He wanted to have global peace because he is seeing people, he is looking at the people, they are running like anything after their job, after their offices, after their businesses, day in, day out, and they don't have any time for themselves, they don't have any time for their family also. So he wanted to change this. And that's why he's suggesting the person, the global people, to take some rest. And he's saying if you take rest, the world, for that moment, maybe 12 hours, 12 days, 12 months, the world would be beautiful. We would all be together in a sudden strangeness. अब वो कह रहे हैं हम सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। किस तरह से जुड़ जाएंगे? In a sudden strangeness. Sudden strangeness means though we are not we are not going to cross the borders. People will remain in their own countries, in their own states, in their own districts, but the whole world will be all together with one kind of bond, that is silence. पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाएगी एक साइलेंस के द्वारा। पूरी दुनिया में एक साइलेंस होगा और पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, अक्रॉस द रिलीजन और द लैंग्वेज और द बॉर्डर्स, उन सब से ऊपर उठ करके हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं पाब्लो नेरूदा ने शायद कोरोना काल की कल्पना कर ली थी। कुछ ऐसा ही हुआ था जब लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में लगभग सारे देशों ने लॉकडाउन कर रखा था। तो उस वक्त हम शायद ये कविता पढ़ते वक्त मुझे लगा कि शायद बहुत पहले ही नेरूदा ने जो कल्पना कर ली थी वो साकार हुई और पूरी दुनिया कितनी एक अलग तरह, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि जंगली जानवर सड़कों पर आ गए हैं, नदी का पानी साफ़ हो गया है, टेलीविज़न में न्यूज़ेज आए कि ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ गया है, पूरी नेचर प्योरीफाई हो रही। दैट्स व्हाट दी पाब्लो नेरूदा वांटेड एट दैट टाइम ओनली, कि बहुत ज़्यादा नेचर में पोल्यूशन हो गया है, बहुत ज़्यादा मेंटल इरिटेशन हो गया है, फिजिकल इरिटेशन हो गया है, लेट्स स्टॉप द थिंग्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए हमें सब कुछ रोक देना चाहिए। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब वो कह रहा है जो फिश, जो डेली जो नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी रुकेगा। जैसा आपने कोरोना के पीरियड में देखा, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन बंद हुआ। मैंने तो एक वीडियो में यहाँ तक देखा कि वो जो गंगा नदी का पानी है वो उसका लेवल इतना साफ़ हो गया था कि आर ओ के बराबर उसका पीएच वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें हो गई थी। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि कुछ समय के लिए नेचुरल एक्सप्लॉइटेशन रुकेगा। फिशरमैन वुड इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स का मतलब यही है यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट सिम्बॉलिक वे में वो कहना चाह रहे हैं। स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ योर रिवर्स एंड ओशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, स्टॉप। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और कह रहे हैं जिन लोगों ने जो भी सॉल्ट मतलब जो भी जिस काम को कर रहा है, जो भी जिस काम में भी लगा हुआ है, whatever sort of work is doing, he'll take some rest and realize, looking at his hands, whatever has he gained and whatever has he lost. एक टाइम मिलेगा हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का। ये पोएम इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन की ही है। अंदर का भी पूरा देखिए कि हमने, वो पोएट यही चाहता है कि हम कुछ दिन के लिए बैठ करके शांति से सब कुछ छोड़ दें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें और देखें कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। एक रेट्रोस्पेक्शन करें कि दुनिया कैसे बदल रही है, बाहर क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेट द वर्ल्ड स्टॉप फॉर अ मोमेंट, लेट द नेचर एंजॉय, लेट द नेचर फ्लरिश। दैट्स व्हाट ही वांटेड। So in this part I am keeping here only, and next part I'll conclude the poem, and in the next part I'll cover the figure of speech also, whatever figure of speech has come. So for this today I am keeping here only, and from my side that's all. And my request is, my sincere request to you all also, that if you are enjoying this video and the explanation, please share with your friends, please share with your batchmates, colleagues. मैंने थोड़ा सा आज कुछ चेंज ये कर दिया है कि आपको ये जितने भी वीडियोस हैं मेरे एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। एक्चुअली एस्ट्रो आरोग्य में बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी, कुछ एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस होते थे जो उनके काम के नहीं है शायद, या अगर
आरोग्य से रिलेटेड वीडियो हैं तो वो भी उनके काम के नहीं थे। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब बच्चों के लिए मैंने एक अलग चैनल एडुकेटर ब्रजेश पे बना दिया है, वो लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। एंड दैट लिंक यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। वहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश क्लासेस से रिलेटेड वीडियोज़ ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ ग्रेट डे।